Hello dear student, welcome back. I'm here again with new topic, and today's topic is note making. The note making is really very interesting topic to the actually everyone. I don't want to mention the name of any class. Actually, it is really very interesting topic to end because this is the point and this is the topic where we faced in various competitive examinations also. हमारे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस चीज को फेस करते हैं. So note making is really very interesting. See, in this topic you work as a journalist. Suppose you have faced some and you have experienced some events and other functions, and you notice something there. And the same is here in this, that when you read, when you analyze and experience things, so you put down some important thing about that particular event and experience. Okay, so here and this topic, okay, whenever we read a large amount of words, and when we have so many words, because we can't memorize them and we can't put them in order. Okay, so what is the best way to putting them down and to understand and to keep them for a longer time in our memory? The best thing is to put down the important thing. The same we will do here. And what are these? I will let you know one by one that how interesting and what are those things which we should keep in mind while reading this passage and while making notes, right? The modern world is full of information. There are different kind of information around us. Is it possible to keep all these information, all those garbage in our mind for a long time? Whatever you heard, and whatever you deliver, whatever you talk and whatever you share, is it possible to keep everything in the mind? I don't think that is possible. Sometimes our mind failed with overburden because we have a limited memory. And in this limited memory, we can keep some good things. To keeping all those garbage, I don't think that it is possible for everyone. So, how can you keep and how can you keep the record of good thing for a long time? How can you remember for a long time? I have a way out. That is the note makings. Yes, you can note down good thing, good information in the diary and in एनी फॉर्मेट जो आपको अच्छा लगता है. डायरी में कर दीजिए, कहीं अपनी किसी नोटबुक में कर दीजिए, एंड व्हाटएवर यू लाइक. So note making help us to reassemble the relevant information, and by doing so you can organize your thought better way. It helps us a lot. Note making is a useful exercise. Everyone should know and must know about it. And it is a great skill, right? It is an exercise and a great practice. So let me tell you that what to do. First of all, we should go through the whatever the material you have. That you may have the story है, कोई editorial आप पढ़ रहे हो, and there will be the drama, novel, and the passages from your lessons, and everything you cannot keep in your mind. So do work like a journalist here to pick the best one out of, and first of all you have to go through from beginning to end, and by doing so I think you have to go once, twice, even thrice can be. If you feel any kind of difficulty to understand, and if there is any difficult word, so relate it with the previous preceding sentences and with the following sentences, so you can understand that what about this word and what it means actually. So after skimming and after getting the words eye view of this passage, you will be at the positions to know that what about, ये passage किस बारे में है, and what could be the title of this passage, and how the writer can create its theme on it, and how he can write on it now. Now it leads to the second step here. What is the second step? Here second step is that you have to divide further this passage, and this material you have to further divide it in many parts. How? This is the passage, and this is the material that you read, divided into many paragraphs, and each paragraph has some important and the keyword which tells something important to rest of the paragraph. आपके पास एक पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ के शुरू में ही आपको कोई ना कोई कीवर्ड मिलता है, उस कीवर्ड के बारे में पूरे पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया जा रहा है, एंड द कीवर्ड इज योर मेन हेडिंग. नोट डाउन करिए इस मेन हेडिंग को, ठीक है? जर्नलिस्ट की तरह काम करिए आप.
एक फंक्शन में जाते हो तो वहां एक अच्छी बात ही लिखोगे, पूरे फंक्शन को डिस्क्राइब नहीं करोगे आप. Oh, the next one is what? Okay, the thing about there in the paragraph, उस मेन थिंग के बारे में, वो मेन आइडियाज कीवर्ड जो है उसके बारे में नीचे क्या बोला हुआ है, राइट अबाउट इट, उसके बारे में छोटे छोटे एक एक दो दो पॉइंट देते जाइए. द सेम वे यू हैव टू गिव, जस्ट सी द साइड ऑफ मी, मेरे साइड में देखिए आप किस तरह की एक मेन हेडिंग होती है. सबसे पहले आपको टाइटल देना है, आप पता है आपको पैराग्राफ किस बारे में, टाइटल दीजिए, मेन हेडिंग के नीचे फिर सब हेडिंग आएगी, छोटी छोटी सब हेडिंग आएगी, उसको 1 2 3 ABC या रोमन अंक के 1 2 3 में लिख लीजिए, एंड दैट इट इज वेरी इजी जॉब. एंड द सेम वे यू कैन गिव एटलीस्ट 4 to 5 मेन हेडिंग and at least 4 to 5 subheading and at least 6 to 10 subheading, and that is sufficient to get the 4 marks. Don't try to do over it. इससे ज्यादा करने की कोशिश मत करिए, because this is the question for 4 marks. So I don't think that you should keep more about it now. इससे ज्यादा कुछ आपको करना चाहिए more than this. So what is the next step here? The next step is here, that how and what way we have to do that. The C, I said keyword, उसकी कीवर्ड के बारे में छोटे छोटे और बिल्कुल छोटे छोटे हेडिंग्स देके पूरी कहानी नहीं लिखनी है. इट शुड बी वेरी मच क्लियर. नंबर 1, नो किसी तरह का इसमें कोई हिडन वर्ड्स या किसी तरह से अपनी कहानी बनाने की, अपनी इंटेलिजेंस दिखाने की जरूरत नहीं है. या द नंबर 2, इट शुड बी ब्रीफ. ब्रेविटी इज द सोल ऑफ एनी काइंड ऑफ नोट्स. वो बिल्कुल ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए. इट शुड बी सो मच रेलेवेंट. डोंट गिव एनीथिंग इरेलेवेंट एंड योर ओन आइडिया. स्टिक टू द पैसेज एंड स्टिक टू द पॉइंट. मेन पॉइंट इज स्टिक टू द टाइटल. नेक्स्ट, दैट इन नोट फॉर्म. नोट फॉर्म या मीन्स पूरी कहानी नहीं बतानी है, हार्डली 2 से 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स बन जाएंगे वो. दैट विल बी योर नोट्स. एंड गिव डैश, ओके, फिगर्स, एंड देयर आर dash figures, and there are some other things that you can add here, like a letter as well, okay, which distinguished it from the others, right? So the last one is here, this is abbreviations. And before the abbreviation, I would let you know that it shouldn't be इसमें ग्रामेटिकल या ग्रामर के पीछे जाने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू गो आफ्टर द ग्रामर, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ वर्क वेयर यू हैव टू टेक आउट द मेन एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? सो नाउ एब्रीविएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वन. एब्रीविएशन देखिए, कोई भी बड़ा वर्ड होता है, just see in the block the way I made, in the same way you also can do, right? Economical, इसको सिर्फ इको लिखो. And while you are writing in the note making at that time, उसमें भी सिर्फ आपको इको ही लिखना है. सिर्फ ये नहीं कि एक बड़ा सा एक ब्लॉक बना के, उस ब्लॉक बनाने के बाद ही उस ब्लॉक में आप इको लिखो, आगे पूरा इकोनॉमिक्स लिखो. हिस्टोरिकल, इंग्लिश, हिंदी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है टू विच यू कैन एब्रीवेट, जिसको छोटा कर सकते हैं, तो उसको आप छोटा करके लिखिए. सी नाउ हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. Now read this passage thoroughly and get the complete understanding of the central idea of this passage. Then come back to see that which word and which sentence I am taking for the main heading, subheading, subheading, and of the word for the abbreviations as keyword. After reading the passage, now what is our task? Our task is to make and do some rough work. See, whenever we are doing such rough work, before that we have to go so comprehensively with the passage, because it needs your analytical power, it needs your understanding, it needs your the fastness of reading, studying, and analyzing and understanding things, so that you can correlate, so that you can understand what about these passages. So after understanding all these things, we can make such points. See here, what are these? मैं पहले पैराग्राफ में जाता हूं. फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे लगता है कि अच्छी चीज मुझे कौन सी लगती है. द बेस्ट थिंग वी यूजुअली टेक आउट ऑफ द पैसेज एंड आउट ऑफ द पैराग्राफ, बिकॉज देयर आर मोर देन वन पैराग्राफ, एंड फ्रॉम दिस पैराग्राफ वी हैव टू टेक आउट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स. द सेम इज हियर. Okay, the need of spiritual quality. Although this is just a rough work, and after that we have to do some more thing and more task over it. So love another, मुझे इसी लाइन में मिल रहा है. लव अनदर, स्पिरिचुअल क्वालिटी की जरूरत है, एक दूसरे से प्यार करना सिखा रहा है ये. लव
a great force. And what is that? It is a great force. I took it importance from the line. Then reasserted the brotherhood. The brotherhood पे भी हाँ force किया गया है. And revealing a civilization, how civilization can be built. So tolerance is a dull virtue. You know why it is telling us that it is a dull virtue. ये dull virtue है, इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है. In a work of reconstruction, so how is it possible? And nothing to do. Nothing odd actually. ये तो nothing odd to tolerance. And it is negative. ये tolerance के लिए बोल रहा है कि tolerance is a negative and it is a dull, it is a boring. So the world is full of the people. In the next paragraph you can see the people क्या दुनिया में बड़े भारी है. Okay, and they vary according to the color and the way of talking and the race as well. उनकी जाति प्रजाति वो भी अलग अलग होती है. Okay, there are two solutions for what? किस चीज के लिए? Okay, देखो एक नाजी सॉल्यूशंस है. इफ यू डोंट लाइक द पीपल सो यू किल देम, बैनिश देम एंड फिनिश कर दो उन लोगों को. ओके, किल करो, बैनिश कर दो. एंड इंटॉलरेंस टू अदर एक्चुअली बिकॉज दे आर द पीपल हु कांट टॉलरेट अदर्स. The second way of life is what is the second solution? Second solution is here the democracy. Democracy है to put up with them, as well as you can. भी आपको उनके साथ assimilate करना पड़ेगा. And that is also very important here. Okay, the way of love them and tolerance you can. अगर आप उनको पसंद नहीं भी करते हो, if you do not like them, so you have to cooperate with them anyhow, and you can stay away from those people, but be with them. फिर भी उनके साथ रहना है. Okay, love them and tolerance भी चीजें जरूरी है. Civilized, okay, future may build under democracy you can made it. And the role of Ashoka, you may have and must have heard the name of Ashoka the Great and who adopted democracy. So here I took it very important. So the mercy and mutual understanding and peace. And this is the role of what? किसका है? Democracy का ही है. So that was just a rough work, and after doing the rough work, we have to give the final touch and what exactly we can give it and how we finally can shape it. Note making. This is almost the final touch to this passage, right? The first one is here. I make some refined work here, and after doing that rough work, I took out some more important that I think that will be the suitable and the nice point and headings to it, right? First is here, note making क्या है हमारी? The love as a spiritual quality. It can work as a spiritual quality. देखिए इसके अंदर मैं और क्या लिख सकता हूँ? Love one another, एक दूसरे से. Okay, help for revealed civilizations को revealed करने के लिए love help करता है. Oh, love. Next one is here. A great force. What kind of force? ये मेरी सेकंड हेडिंग रहेगी यहाँ पे, लेकिन फिर भी अभी हमने इसको सेकंड हेडिंग के रूप में, ये मेरी मेन हेडिंग है, उसके बाद ये नंबर 2 या सब हेडिंग है इसी की. सो लव इज ए ग्रेट फोर्स, राइट? ए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, ग्रेट फोर्स में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल. एंड इट रीअसर्ट द ब्रदरहुड, राइट? ब्रदरहुड को कायम करने में हेल्प करता है. सो नाउ द रोल ऑफ टॉलरेंस. अब ये टॉलरेंस की हम बात करेंगे, नंबर 2 हेडिंग है. इसकी सब हेडिंग्स क्या हो सकती है? ओके, लव सक्सीड एट पर्सनल लेवल. ये पर्सनल लेवल तक सीमित है, ठीक है. ओके, द टॉलरेंस नीडेड इन पब्लिक अफेयर. ये इसमें पब्लिक अफेयर की जरूरत होती है कि भी हम पब्लिकली भी एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट होना जरूरी है. बट द टॉलरेंस इज डल, boring and negative. So I took something from that rough work. The next one is my third point here. Role of people in the world. भाई लोगों का क्या रोल रहता है इसमें, टॉलरेंस में या लव में? So they are intolerant to one another. एक दूसरे के प्रति so much intolerant. Nobody tolerate another person. So the skin color and race को लेके, किसी की शक्ल को देख के, या किसी का यहाँ तो इकोनॉमिक स्टेटस को भी, चलो ये वर्ड इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं लेंगे. किसी के लोगों को और उनकी कलर को देख के भी वी आर सो मच इंटॉलरेंट विद दैट. सो देयर इज अ 2 सॉल्यूशन फॉर इट. इसके लिए मैंने सब हेडिंग निकाली. नंबर 3 की हेडिंग में सब हेडिंग निकाल दिया यहाँ पे. ये एक था नंबर 2 सॉल्यूशन क्या है? वन इज अ नाजी सॉल्यूशन. व्हाट इज द नाजी सॉल्यूशन? नाजी सॉल्यूशंस में फिर हमने यहाँ पे पॉइंट्स निकाले, सब हेडिंग्स निकाली कि नाजी का सॉल्यूशन क्या है? किल करो, बैनिश करो, सेग्रेगेट करो. इफ यू डोंट लाइक देम, अगर उनको पसंद नहीं करते हो तो. ओके, दूसरा वे क्या है? डेमोक्रेटिक वे है.
डेमोक्रेटिक वे में क्या है, पुट देम विद देम, सॉरी पुट अप विद देम, भी उनके साथ रहो। ओके, टॉलरेट देम इफ डोंट लाइक, अगर उनको आप पसंद करते भी नहीं तो भी आप टॉलरेट करो, दैट इज द वे ऑफ डेमोक्रेसी। यू नॉट नीड टू सो मच एक तरह की हेट्रेड फैलाने की या फिर नफरत फैलाने की जरूरत नहीं है डेमोक्रेसी में, आप दूर से दूर रहिए, बट स्टे विद देम एंड टॉलरेट देम। नेक्स्ट इज द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का फ्यूचर क्या हो सकता है, यू मस्ट हैव हर्ड दैट आई वाज टेलिंग यू, अशोका ने अडॉप्ट करी थी डेमोक्रेसी, अडॉप्ट डेमोक्रेसी, एंड व्हाट वाज द रोल एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन देन, व्हाट इज रियली द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज ऑन द बेस ऑफ मर्सी, द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, and there is cooperation, मैंने अपनी ओर से एक शब्द निकाल दिया उसके लिए, cooperations and peace, these are some important point under it। and now one more thing left, that is abbreviations, कि मैं abbreviations कैसे निकाले। अब abbreviations का रोल क्या रहता है, ये स्पिरिचुअल है यहाँ पे, इसके लिए एक ब्लॉक बनाएंगे, यहाँ पे नहीं है स्पिरिचुअल के लिए, मैं सिर्फ SP लिखूंगा, स्पी, या फिर ये ऐसे करके L भी लिख सकता हूं स्पिरिचुअल, उसके बाद हम पूरा लिखेंगे, ये एब्रीविएशंस रहती है। ओके, क्वालिटी के लिए भी मैं यहाँ पे QU क्वालिटी, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर स्पिरिचुअल है तो आपको इसके दौरान सिर्फ इतना सा लिखना है, उसके पीछे डॉट लगाना है। क्वालिटी, अगर सिर्फ क्वालिटी करना है QUI करो, सिर्फ इतना, उसके पीछे डॉट लगा दो। So to verify and to identify that this word is a abbreviation. The next one is here we have some civilization, देखिए CIVIL, सिर्फ इतना करो, सिविल कर दिया, फिर भी इट मीन्स ये पूरा और कुछ बोलने वाला तो सिविलाइजेशन ही है। नेक्स्ट वन इज द ब्रदरहुड इज आल्सो हियर, ओके, ब्र और डी, हम ऐसे करते ब्रदरहुड छोटा करके, टॉलरेंस के लिए TOL कर दो सिर्फ, ओके। नेक्स्ट वन इज सक्सीड भी है तो इसको SUC कर दो सिर्फ। एंड नाउ वी हैव सम मोर नेगेटिव, NEG, इज देयर एनीथिंग, यहाँ पे कुछ है, हाँ सॉल्यूशन है, SOL सिर्फ इतना कर दो, डेमोक्रेसी है DEM कर दो, ओके। एंड नाउ वी हैव सम मोर थिंग्स लाइक कॉपरेशंस भी हो सकता है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ UND, ओके। दिस विल बी सम वेरी मच बेसिक अबाउट द नोट मेकिंग।